Good morning students, welcome back to our another online English class for class 10th, and today we are doing part 2 of your chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom from your book First Flight. Okay, we have already done the chapter. I hope you remember everything और आप सबको सब कुछ समझ में आ गया था. And in this chapter we will do the terms and some important good sayings of this chapter that we have gone through. और अभी but before going on terms we will have a quick recapitulation of the chapter. We will recall it first, okay, in very short. So the title of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Mandela was famous, one of the most famous personalities of the world. And why he was famous? Because he is the first black president of South Africa. He started democratic system in South Africa. He abolished apartheid, जो वहाँ पर एक गवर्नमेंट पॉलिसी थी जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे दे वर नॉट लिविंग प्रॉपर लाइफ लाइक एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. उनके राइट्स को जो है हैरास किया गया था, उनको सप्रेस करके रखा गया था. दे हैड बैड लाइफ बिकॉज ऑफ होल्ड ऑफ वाइट्स इन द कंट्री. और इसी पॉलिसी के थ्रू ये जो रंग भेद था, डिस्क्रिमिनेशन बन गया था साउथ अफ्रीका में बिकॉज ऑफ अपार्टाइड. इसकी वजह से वाइट्स हैड एन होल्ड ऑन ब्लैक्स. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद हिज मैनी अदर फ्रेंड्स, इन सब ने मिलकर अपार्टाइड को वहाँ से अबॉलिश किया, ख़त्म किया, एक नया साउथ अफ्रीका बनाया जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम आया. एंड दे मेंटेन्ड जस्टिस, peace, equality, humanity and respect and dignity after that. And एक equality आ गई थी which was a result of their efforts. Okay, so this chapter Nelson Mandela जो है it's about the journey of Nelson, a part of the journey of the Nelson Mandela. और A Long Walk to Freedom, this is a book. Long Walk to Freedom is a book written by Nelson Mandela himself about his journey. ओके, हाउ एंड व्हाट ही डिड, जिसकी वजह से लास्ट में वो साउथ अफ्रीका में फ्रीडम तक पहुंचे. ओके, सो योर दिस चैप्टर इज अ स्मॉल एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें नेल्सन मंडेला ने 10th में 1994 के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, सिनेरियोज, गैदरिंग और व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट, व्हाट वर द थॉट्स कमिंग इन हिज माइंड एंड हाउ ही वाज कंपेयरिंग द प्रेजेंट डे विद द पास्ट ही हैड, और कैसे उन्हें सल्यूट्स मिले एंड रिस्पेक्ट्स मिली एंड दे वर गेटिंग थैंक्स फ्रॉम द होल वर्ल्ड and many other world leaders. तो ये सब उन्होंने इस दिन में 10th में 1994 में आपके इस चैप्टर में जो एक्सट्रैक्ट है उसमें शेयर किया है. एंड व्हाई द डे वाज स्पेशल? बिकॉज दैट वाज द डे व्हेन नेल्सन मंडेला वाज अबाउट टू टेक ओथ, अबाउट टू टेक प्लेज एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. Okay, so this was the chapter. अभी let's go to the terms which we have gone through earlier also, but अभी हम एक बार और इन terms की तरफ ध्यान देंगे. The first and the most important term of the chapter is apartheid. पर उससे पहले autobiography. As I said, Long Walk to Freedom is a book, is an autobiography of Nelson Mandela. What is this autobiography? It is a book written by a person on his own life. दैट इज एक इंसान खुद ही बुक लिखता है अपनी खुद की स्टोरी के बारे में, अपनी खुद की लाइफ के बारे में, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. देन हमारी सेकेंड टर्म जो आती है दैट इज अपार्टाइड. बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स रिकॉल इट अगेन. इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ब्लैक स्किन एंड वाइट स्किन पीपल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट वॉज अ गवर्नमेंट पॉलिसी मेड बाय ब्रिटिशर्स टू discriminate between black skin people and white skin people. काले और गोरे लोगों के बीच में रंग भेद करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी ताकि ब्लैक्स को सप्रेस किया जा सके एंड दे कैन गिव अ होल्ड टू वाइट्स. और ब्लैक्स को राइट्स ज़्यादा नहीं थे, दे वर वेरी मच सप्रेस्ड एंड दे वर ट्रैप्ड इन एन इनविजिबल चेन्स. वो चेन्स दिखाई नहीं जाती थी पर उन्हें बांध दिया गया था एंड द होल्ड ऑफ चेन्स वर गिवन टू वाइट्स. ठीक है, दिस वाज द पॉलिसी. और ये पॉलिसी स्टार्ट कब हुई? देयर वाज अ वॉर, एंग्लो बोर वॉर. ठीक है, दिस एंग्लो बोर वॉर वाज बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड टू ग्रुप्स ऑफ साउथ अफ्रीकन्स. इनके बीच में ये वॉर स्टार्ट हुई थी 1902 में. दिस वॉर केम टू एन एंड
और इस वॉर के ख़त्म होने के बाद अपार्टाइड जो है वो ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया था साउथ अफ्रीका में फॉर डिस्क्रिमिनेशन. ओके, देन नेक्स्ट टर्म इज डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, भेदभाव करना. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, दो ग्रुप्स को अलग अलग तरह से ट्रीट करना. एक को काफ़ी अच्छा होल्ड देना, सुप्रीमेसी प्रोवाइड करना, और दूसरे को सप्रेस करना. दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. Okay, the next term is abolition. As I said, he abolished apartheid and set another system of government, that is democracy. So what is abolition? The word means the act of ending an activity. कोई activity, कोई policy, किसी को जो already on go है, जो already चल रही है, in process है, उसको ख़त्म करना. द एक्ट ऑफ एंडिंग एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए जो एक्ट्स, जो स्टेप्स ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एबॉलिशन. देन फादर ऑफ द नेशन, Mr. Nelson Mandela sacrificed a lot, did a lot to abolish apartheid in South Africa, and इतना ही नहीं था कि abolition के बाद he was quiet. Abolition के बाद he did much more work for the people of South Africa. उन्होंने पीस मेंटेन किया, इक्वालिटी मेंटेन की, हार्मोनी मेंटेन की. ही प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स टू एवरीवन. ही रिमूव्ड ऑल द डिस्क्रिमिनेशंस इन द कंट्री और सबको एक साथ लेकर आए, जस्टिस मेंटेन किया. Because of this thing, democratic system start किया. Because of all these things and contribution and his devotion towards the country and the people of the country, he was entitled as the father of the nation of South Africa. Like we have Mahatma Gandhi in our country, हम उन्हें बापू बोलते हैं, फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव ट्रिब्यूट टू हिम बिकॉज ही ऑल्सो सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, डिड अ लॉट टू मेक इंडिया फ्री. इन द सेम वे नेल्सन मंडेला वॉज ऑल्सो टाइटल्ड एज फादर ऑफ नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका टू प्रोवाइड हिम ट्रिब्यूट, रिस्पेक्ट एंड से थैंक्स. ओके, देन प्लेज. Pledge means promise, oath, कसम. You must have heard this word earlier also. हमारे इंडिया में भी हर एक पोस्ट पर प्रेसिडेंट से लेकर जितने भी मिनिस्टर्स हैं सिलेक्ट होते हैं, they all take pledge before holding their position. So pledge means जो कस्में, जो प्रोमिसेस मेड होते हैं, मतलब जो बनाए जाते हैं, प्रोमिसेस किए जाते हैं बिफोर होल्डिंग द एग्जैक्ट पोजीशन, काम शुरू करने से पहले ली गई प्रोमिसेस, ओथ्स, ये सब ओथ जो होती है, कसम होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेज. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. Seventh point is white supremacy. As I already told you earlier also that जो white skin people थे, they had a hold on black skin people. That is white supremacy. कि whites were more powerful, गोरे लोग ज़्यादा powerful थे, and they were suppressing black skin people. Black skin people were living like slaves in South Africa. They had lots of restrictions on them. ठीक है, slaves की तरह जी रहे थे, बहुत सारी restrictions में, बंदिशों में जी रहे थे ब्लैक स्किन पीपल, और वाइट सारी सुप्रीमेसी को एंजॉय कर रहे थे. ओके, then another point is rainbow gathering. Now this rainbow gathering is one of the most important term used in the chapter. Okay, rainbow gathering मतलब the group, the gathering of the people who were there to witness the ceremony, they were gathered at a place and it was looking very colorful. It was looking very rainbow kind of. Why? Because people from different skin color, races and countries gathered together at a place. मतलब अलग अलग तरह की races, अलग अलग तरह की skin color के लोग, अलग अलग countries से आकर लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए, and it was looking very colorful, like rainbow had lots of colors in it. In the same way, that gathering of people from different races, of different skin color and from different countries was looking like a rainbow. Okay, skin color मतलब कोई गोरा था, कोई काला था, कोई वेटिश था, तो सबको मिलाकर जब वो सब कलर के लोग, सब रेसेस के लोग एक जगह इकट्ठा हुए, it was looking like a rainbow, a colorful gathering. Then next is democracy. You all know what is democracy. We in India also we are having democratic system in which government is elected by the people. लोग अपनी गवर्नमेंट चूज करके गवर्नमेंट बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए. दैट इज डेमोक्रेसी. देन पोडियम. पोडियम इज अ वर्ड यूज इन दिस चैप्टर. पोडियम मतलब स्टेज.
एक स्टेज जहां पर नेल्सन मंडेला वाज अबाउट टू टेक ओथ, अबाउट टू टेक प्लेज एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द country. Okay, then next is extraordinary human disaster. This is also another most important term used in the chapter and many of you had doubt about it also. काफियों ने इसको रॉन्ग किया था, काफियों को इसमें डाउट था. So what does this term mean? Extraordinary human disaster. It means suffering of blacks in the hands of whites. वही पुराना ही है. Whites had supremacy in South Africa earlier. तो वाइट्स के हाथों, वाइट्स की वजह से, गोरे लोगों की वजह से ब्लैक्स वर सफरिंग अ लॉट. काले लोग, जो काले स्किन के लोग थे, दे वर सफरिंग अ लॉट, दे वर लिविंग लाइक स्लेव्स, दे हैड लॉट्स ऑफ बॉन्डेजेस, लॉट्स ऑफ चेन्स ऑन देम एंड वाइट्स हैड होल्ड ऑफ दोज चेन्स. मतलब वाइट्स ज़्यादा पावरफुल थे एंड ब्लैक्स वर सप्रेस्ड, ब्लैक्स को दबा के रखा हुआ था. दे वर नॉट अलाउड टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. और बहुत सफ़र किया उन्होंने, बहुत प्रॉब्लम्स झेली ब्लैक कलर के लोगों ने. वो प्रॉब्लम्स की वजह से, वो जो प्रॉब्लम्स वाइट लोगों की वजह से, गोरे लोगों की वजह से ब्लैक कलर के लोगों ने झेली, दैट those problems are called extraordinary human disaster. कोई नॉर्मल डिजास्टर नहीं था, कोई नॉर्मल आपदा नहीं थी, नेचुरल आपदा नहीं थी, बाढ़ आ गई, वॉर हो गई, नथिंग. इट वाज नॉट एट ऑल नॉर्मल, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बिल्कुल हटके, बहुत ही डिफरेंट रीजन की वजह से, जो अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से ह्यूमंस ने, ब्लैक कलर के लोगों ने वहाँ पर जो ये डिजास्टर्स झेले, प्रॉब्लम्स झेली, वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ वाइट्स. Then next is ANC. ANC is short form of an political party in South Africa, African National Congress. Like we have Congress party in our country, in the same way Africa had a party, African National Congress. Okay, जिसे नेल्सन मंडेला ने join किया था when he was in college and when he realized that he is not having freedom to live his life and many other people like him are also not living free. Okay, so then to oppose this policy apartheid, he joined African National Congress. Okay, then the next term is emancipation. Emancipation means freedom from restrictions. बंदिशों से आज़ादी मिलना is emancipation. जैसे यहाँ अपार्थाइड के एबॉलिशन के बाद जो पॉलिटिकल एमनिसिपेशन हुआ, यानी कि जो पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस थी जिसमें ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू एंटर, तो वो चीज़ से हाँ उन्हें फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस. ओके, गो फर्दर. Our 14th point is oppression. Oppression word is used in this chapter. It also again means suppression, दबाना, torture करना, अत्याचार करना. Oppression, oppression of blacks over from the hands of whites in South Africa. Then chevron is a term used in this chapter. Chevron means a V-shaped zigzag. इस तरह से जो बनता है, ये हमने देखा था when jets were moving from the heads in the sky, they were making a formation of zigzag. They were flying in V-shaped zigzag because this zigzag is a part of South African's flag. Okay, and they were leaving कलरफुल स्मोक. वो सभी कलर्स जो साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लैग में आते हैं, वो कलर का स्मोक छोड़ते जा रहे थे एंड दे वर मूविंग इन अ zigzag format, V shaped zigzag format. So that shape, V shaped zigzag, इस तरह से, this is called chevron. Then Anglo-Boer War, I've already told you about this thing. This is the name of a war, the war which took place between Britishers and two groups of South Africa. ब्रिटिशर्स और साउथ अफ्रीकन के दो ग्रुप्स के बीच में ये वॉर हुआ था एंड इट लास्टेड टिल 1902. इस वॉर के बाद ही अपार्थाइड बनाया गया था साउथ अफ्रीका में थ्रू ब्रिटिशर्स. ओके, फॉर डिस्क्रिमिनेशन. देन रेसिलियंस. रेसिलियंस के ऊपर वी हैव डन 2 वर्कशीट्स on this word resilience. I think you all must be aware about it. You should know the meaning of resilience. Let's see it again. Ability to deal with hardship and recover from its efforts. I hope you remember I told you earlier also worksheets के साथ I explained the meaning of that chapter, that word, this word resilience. और मैंने बताया था कि resilience is that ability, that strength by which we deal with our everyday's problem.
ठीक है, एबिलिटी टू डील विथ हार्डशिप, जो डे टू डे लाइफ में हार्डशिप होती है, प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को डील करना एंड डील के साथ रिकवर करना, टेकिंग आउट योर सेल्फ फ्रॉम द डेली डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स पॉजिटिवली इज कॉल्ड रेजिलियंस। ओके, देन इल्यूजन, इल्यूजन मतलब अ फॉल्स आइडिया, मतलब द थिंग विच इज नॉट देयर बट यू थिंक इट्स देयर, भ्रम, जो चीज़ ना हो उसके बारे में सोचना कि हाँ वो है। लेट्स मूव ऑन नाउ, courage, wisdom and generosity. Nelson Mandela was very much impressed by some of his friends who struggled with him, who sacrificed with him for this fight and for abolition of apartheid. And these are some of those names: Oliver Tambo's, the Walter Sissoula's, the Chief Lut, the Yusuf Datus, the Bram, the Robert. These were the fighters he was very much impressed from. He said he learned the real meaning of wisdom and courage from the personalities and from the acts of these persons. Okay, how what he said, उनका कहना था कि करेज का असली मीनिंग मुझे इनके थ्रू, इनको देखकर पता चला कि इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी सफरिंग्स और इतने टॉर्चर के बाद भी दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। करेज का मतलब फेलियर, गिव अप करना नहीं, करेज का मतलब रियल, मतलब इन्होंने मुझे सिखाया। लेट्स सी व्हाट इज द रियल मीनिंग अकॉर्डिंग टू हिम। क्या मीनिंग समझा उन्होंने करेज से? अकॉर्डिंग टू हिम द रियल मीनिंग ऑफ करेज आफ्टर हिज एक्सपीरियंसेस विद हिज फ्रेंड्स इज द रियल करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ऑन योर फियर। डर लगना बुरी बात नहीं है, चीज़ों से डरना इज नॉट बैड, लेकिन द रियल करेज, रियल विक्ट्री, रियल विजडम, ये सब क्या है? असली बहादुरी क्या है? डर के आगे जाना, डर को जीतना, डर पर विजय प्राप्त करना। ओके, विक्ट्री ऑन योर फियर, अपने ही डर को जीतना इज द रियल विक्ट्री, इज द रियल करेज एंड रियल विजडम ऑल्सो। तो दैट्स व्हाट ही सेड कि मैं करेज का कुछ और मतलब समझता था, बट एक्चुअली नाउ आई अंडरस्टूड आफ्टर मीटिंग ऑल दीज पर्सनैलिटीज दैट एक्चुअली द रियल करेज इज विक्ट्री ऑन योर फियर। ओके, then there are few more sayings that he said while taking oath। उस टाइम पर जो उन्होंने कहा था, बातें कही थी, उनमें से कुछ बातें जो है we are discussing here। First, courage था, then second, my country is rich in minerals and gems that beneath its soil, but I have always known that its real greatest wealth is its people। South Africa is a very famous country because वहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी गुड। एज ही सेड माय कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। जेम्स मीन्स डायमंड्स। कोहिनूर इज ऑल्सो a diamond of South Africa। So diamonds and minerals ये सब साउथ अफ्रीका के सॉइल के नीचे मिलता है, रॉ मटेरियल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, माय कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स बीनेथ इट्स सॉइल। उसकी सॉइल के नीचे, साउथ अफ्रीका के सॉइल के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे जेम्स हैं, डायमंड्स हैं, एंड माय कंट्री इज फुल ऑफ इट, रिच इन इट। बट आई हैव ऑलवेज नोन, मुझे शुरू से पता है कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। वो जैम्स और डायमंड्स पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी वेल्थ है, मिनरल्स बहुत बड़ी वेल्थ है, पर आई नो साउथ अफ्रीका की रियल वेल्थ ये जैम्स एंड मिनरल्स नहीं, उसके खुद के लोग हैं। द रियल वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज इट्स पीपल एंड नॉट द मिनरल्स एंड जैम्स। ओके, देन people can be taught to love, for love comes more naturally than hate। When we are born, when we take birth, then we know nothing about the word hate, anger, ये सब हमें नहीं पता होता। What we know is love, love for your family, love for your parents, love for your siblings, cousins, love for your neighbors, love for your relatives, love for your teachers, school and all these things। तो बाद में, इसके बाद when we grow up, when we start becoming mature, when we goes to our maturity, then कुछ लोग हमें सिखाते हैं कि love नहीं, you should do hate, you should feel angry, you should do this, you should create obstacles or you should not take the things like they are coming to you, और फिर हम hate करना सीखते हैं। बट स्टार्टिंग में नेचुरली हमें hate नहीं, हमें love पता होता है कि क्या होता है, that too positive love। Okay,
So that's what he is saying. People can be taught to love. हम लव करना, सपोर्ट करना और इक्वालिटी के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना ज़्यादा अच्छे से लोगों को सिखा सकते हैं instead of hate, because love comes more naturally. It's there in our body. Then another one is Nelson Mandela thanked all the international personalities and guests who were there to attend the ceremony. और उस thanks के बाद जो words उन्होंने as thanks बोले उसके बाद what he said a line, common victory for justice, for peace, for humanity. He said this victory of South Africa over apartheid, over discrimination, over lots of losses and lags, this victory is not just South Africans' victory, not only our victory, but it is a common victory for justice, for peace, for humanity. ये पूरे वर्ल्ड की विक्ट्री है, आप सब की विक्ट्री भी है जो यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी इस विक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आए हैं. दिस इज़ योर विक्ट्री ऑल्सो, दिस इज़ कॉमन विक्ट्री फॉर होल वर्ल्ड. और ये क्या क्यों है कॉमन, ये क्यों सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए एक बहुत ही न्यू स्टार्ट है, बिकॉज इट्स विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमैनिटी. नो डिस्क्रिमिनेशन, नो स्लेवरी, नथिंग, नो सप्रेशन एक्सेट्रा. Then I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Nelson Mandela said, I was not like that when I was a kid. I was not hungry for freedom. Whatever freedom I had, I enjoyed was enough for me. But why he became hungry for freedom afterwards, when he saw the oppressions, suppressions and sufferings nearby him. Then that's what he's saying कि मैं हंगर, फ्रीडम की हंगर के साथ, फ्री होने के लिए आज़ादी के साथ पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री बॉर्न हुआ था. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर फर्स्ट पार्ट दैट ही हैड वेरी गुड चाइल्डहुड, फ्री चाइल्डहुड. सो ही सेड कि आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बचपन में फ्री था, मैं फ्रीडम के साथ बॉर्न हुआ था, हर तरह की फ्रीडम के साथ बॉर्न हुआ था. बट लेटर ऑन सर्कमस्टांसेस क्रिएटेड दिस हंगर इन मी. नाउ लेट्स गो फर्दर. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurts. He's saying ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड थी, इसकी वजह से साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका के लोगों में बहुत गहरे घाव हैं. साउथ अफ्रीका के लोगों ने बहुत झेला है. दे सफर्ड अ लॉट. सो दीज डीप वाउंड्स विल नॉट गो इजीली फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि मे बी डीलिंग विद दीज डीप वाउंड्स which will take years or maybe will take generations recovering from that profound hurts. Profound मतलब very deep, बहुत गहरे घाव. ठीक है. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि क्रिएटिंग अ न्यू सोसाइटी में टेक लॉन्ग टाइम, क्योंकि दिस पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड सो मच वुंड्स एंड सो मच हर्ट्स जो बहुत ही इजीली नहीं जाएंगे. एंड इट मे टेक मैनी ईयर्स और मे टेक जनरेशंस ऑल्सो टू रिकवर फ्रॉम दीज वुंड्स एंड दीज प्रॉब्लम्स दे फेस टिल नाउ. उनका असर हमेशा रहेगा. बट फ्रॉम दैट ऑल्सो दे विल क्रिएट अ सोसाइटी. अब जो नई सोसाइटी क्रिएट करेंगे, इट विल बी अ सिंबल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, पीस, हार्मोनी एंड डिग्निटी. और ये सोसाइटी इतनी आइडियल सोसाइटी होगी कि होल वर्ल्ड विल फील प्राउड ऑन इट. दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस लाइन. ओके, आफ्टर दैट chapter is over, terms are over, the main points are over. Now let's have a short and quick glance on what kind of questions you can have from this chapter. सबसे पहला और most important point is the Nelson Mandela. Of course he is the only and the main character of the chapter. So उसके ऊपर you can get a question किसी भी तरह से आ सकता है कि give a short or brief sketch of Nelson Mandela, Nelson Mandela's life or what he did in his life, why he was famous. इसी तरह से घुमा फिरा कर you can get anything on Nelson Mandela. We have already discussed it in our first part of this chapter 2, but let's have a recapitulation of it.
Let's revise it again. I already told you earlier also, Nelson Mandela was born on 18 July 1918 and was dead on 5 December 2013. He was of 95 years on this day. Okay, he was born in South Africa. He enjoyed his childhood freely. He had extreme freedom in his childhood like all other kids have. Okay, he belonged to Thambu royal family और free childhood में he was free to do anything. याद होगा आपको, मैंने बताया था, he was free to run, he was free to play, he was free to roast the weeds, and he was free to do whatever he wanted to do, like ride the bull's back. और उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई when he entered his college life. Then he realized that he is actually not free, his freedom is already snatched from him. और उसके ऊपर बहुत सारी restrictions आ गई, like he was not free to stay outside at night, he was not free to read the books of his choice, he was not free to marry a girl of his choice, he was not free to start his family life according to his choice, he was not free to do the job of a job to earn the livelihood according to his potentials and skills. वो भी freedom नहीं थी उसको earn करने की, to show his potentials. He was not free to show his skills also, or he was not having dignity and respect in his life. Then he realized many other people like him are not living their life with dignity. Slavery kind of life was there for them. So उसके बाद he started revolting apartheid, and then he joined African National Congress. Then he was prisoned for 27 years. After that, because of efforts of his efforts and many other people like him who were opposing apartheid earlier also, they all started working against it, and finally they won, or apartheid was abolished from South Africa because of his efforts, and that's why he was selected as first black president of South Africa. Along with it, he was first elected black president also, and he started democratic system in the country. Then later on he was declared as father of the nation of the country. Okay, so ये था नेल्सन मंडेला के बारे में. And what other things you can get is, we can get question on Anglo-Boer War. Fine, we can get question on apartheid also, the policy. Nelson Mandela we have already discussed, and we can get question on gathering on 10th May. और प्लेज वाले दिन जो गैदरिंग थी, we can get question on that also. We can get question on international guest of the gathering. We can get question of the programs जो उस समय ऑर्गेनाइज किए गए. We can get question on the stage, the podium and the open air stage we discussed earlier, कि किस तरह का स्टेज था, कैसे वो स्टेज दूसरे स्टेज से और प्रोग्राम से डिफरेंट था, यूनियन बिल्डिंग्स के बीच में था, उसका डिस्क्रिप्शन के बेस ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. वी कैन गेट क्वेश्चन ऑन द डे 10th May 1994, कि किस तरह का दिन था, ऑटम दिन था, क्लियर था, ब्राइट था, क्या डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो उस दिन के बारे में. वी कैन गेट क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो. देन वी कैन गेट क्वेश्चन ऑन द प्लेज taken by the president, that is Nelson Mandela. क्या pledges लिए गए, क्या उन्होंने promises किए थे. We can get question on that thing also. Along with it, one more thing, I think we can get question of comparison between Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. What do you think is the similarities between Mahatma Gandhi and Nelson Mandela? ठीक है, this is homework for you also. I want you to answer me this question. What were the similarities between both the personalities, and what do you think how they are similar, and what do you think what was the result of their efforts in their country? Thank you for today.